Good afternoon, friends. Am I audible? Can anyone just confirm in the chat? And is the screen visible? Yes. Thank you. Yeah. Good afternoon, friends. I am Pratik Jain and I head the products at the digital well business of Anand Rathi. For today's session, as the topic is recipe simplified, that is structure product simplified, and we'll understand the what, how, and when of structure product. So the session will take around 30-35 minutes. Any questions, partners, you all have, you all can put it in the Q&A box and I'll take it at the end, right? Uh, if any slides needs to be explained, again, I'll do it at the end as well. So we'll take the presentation in half an hour and then we'll open it up for Q&A. So let's start. Why structure product? So I think so. This is a question which most of the times the partner has or the client has. Client पूछता है कि यार क्यों structure product होना चाहिए? क्या है ये structure product? तो first क्या structure product होने के पहले I think so सबसे important समझना है कि structure product क्यों होना चाहिए आपके portfolio में. I think so ये बहुत critical है because when you position it कि यार ये क्यों होना चाहिए क्लाइंट के पोर्टफोलियो में, इसकी नीड क्या है, वो अगर समझ लेता है क्लाइंट, देन आई थिंक सो द नेक्स्ट स्टेप इज वेरी इजी. So first, Q structure product. So just to take you back, I think so most of the partners would have seen this slide. या आप लोगों ने देखी होगी ये slide, but would want to reiterate that say 10 lakhs invested in 1990 across fixed deposit would have been 1.2 crores, gold would have been 1.8 crores, real estate would have been 2.1 to 2.8 crores, Sensex would have been 7.2 crores at 14% per annum, and mutual funds would have delivered 56 to 92 crores, which is 20 to 23% per annum. But this journey is for 23 years, मतलब 33 years, sorry, जिसने मतलब 33 years invested रहा है, उसने ये returns बनाए हैं. पर क्या market हर साल ये returns देता है? The answer is no. Market doesn't deliver every year. So we all know that long-term equity has delivered, will deliver. But is it like an FD कि यार ये हर साल आपको 14% देगा? The answer is no. There are periods when the market delivers supernormal returns. There are periods when the market doesn't deliver and it underperforms or delivers negative returns as well. Now this is the journey of a per year return. तो ये अगर per year का return देखते हैं last 33 years का, तो इसमें क्या दिखता है कि यार मार्केट ने कुछ साल में शायद 244%, 78%, the recent one was pandemic के बाद जो रन हुआ था 71% रिटर्न दिया. बट मोस्ट ऑफ द टाइम दैट इज एवरेज और एवरेज से कम ज्यादा ऑब्जर्वेशंस देखे हैं जहां पे मार्केट ने नेगेटिव रिटर्न्स भी दिए हैं और सब पार रिटर्न्स ऑफ 3-4-5% भी डिलीवर किया है. सो long term, if I stay invested, I would have made 14% in the Sensex. But does it mean that I've made 14% every year? The answer is no. So most of the times जब client अपने पास आता है, वो long term investor होता है, right? पर अगर ऐसे रिटर्न्स हो एंड इस 33 इयर्स की जर्नी में से मैं अगर टॉप 3 बेस्ट फाइनेंशियल ईयर्स निकाल देता हूं तो रिटर्न्स तो 6% हो जाते हैं. तो ये डेटा कुछ बोल रहा है. ये डेटा क्या बता रहा है कि मार्केट में होगा कि ऐसे 3 से 5 साल के काफी पीरियड्स होंगे जहां पे मार्केट विल डिलीवर सब पार रिटर्न्स ऑफ 3-4-5-6% per annum, and there will be one bumper year in which the market delivers 60-70-80%. Now which year will be a bumper year? That is something which nor do I know, no one knows it कि यार कौन सा साल बम्पर ईयर होगा. पॉइंट है कि अगर क्लाइंट उस बम्पर ईयर में इन्वेस्टेड नहीं रहा तो ही विल नॉट मेक दोज रिटर्न्स, ही विल मेक सब पार रिटर्न्स ऑफ 3-4-5%. सो दिस इज व्हाट हैपेंस दैट व्हेन वी स्पीक टू अ क्लाइंट, जब हम बात करते हैं क्लाइंट से, हम बोलते हैं कि सर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, हम सब कुछ लॉन्ग टर्म के लिए स्टार्ट कर रहे हैं. बट once the client starts investing and suppose next 2 years, 3 years, if the market doesn't deliver and market delivers subpar returns,
His returns would be single digit 3, 4, 5%. म्यूचुअल फंड्स होगा, स्टॉक्स होगा, पीएमएस होगा, कुछ भी होगा तो भी रिटर्न सिंगल डिजिट में ही होंगे एंड लो सिंगल डिजिट में होंगे अगर निफ्टी नहीं डिलीवर करता है. सो ये जो लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन जर्नी है उसमें 3 साल में ही क्लाइंट बोलता है यार, 2 साल में ही क्लाइंट बोलता है नहीं रिटर्न्स नहीं बन रहा है यार, इससे अच्छा तो मैं एफडी में डाल देता हूँ. This is where the journey breaks and he moves out of the equity markets. He goes back to debt. कि यार डेट में एटलीस्ट मुझे 6-7% तो मिलने वाला है, उतना तो गारंटी है. So he moves there. Now what we actually did is that if this is how the market behaves, मतलब मार्केट ऐसे ही बिहेव करता है कि यार 33 साल में ऐसे 3 साल 5 साल के काफी पीरियड्स होंगे जहां पे मार्केट नहीं डिलीवर करेगा. उसके बाद शायद एक बम्पर ईयर आ जाएगा जहां पे मार्केट बहुत अच्छा रिटर्न्स दे देगा जिससे ओवरऑल एवरेज अच्छी दिखेगी, बट the client has to stay invested. Now, to actually make this long-term wealth creation journey smoother, that's where we said, yaar, you need something else. So, wealth creation journey with mutual funds, अगर सिर्फ देखे तो high probability of 12 to 15%, long term में तो है, medium to short term में नहीं है, because market नहीं deliver करता, जैसे मैंने बताया अभी. Risk of capital loss long term में नहीं है, but medium to short term में there is 3 to 5 year period में there will be periods, there will be instances where the client can make negative returns or you can say flattish returns, right? Double digit returns across market cycle. Long term में देखूंगा मैं, अगर 10 साल देखता हूँ, 10 साल के ऊपर तो कोई भी साइकिल ले लो 10 साल की, मार्केट में क्लाइंट ने डबल डिजिट रिटर्न्स अक्रॉस मार्केट साइकिल्स बनाया होगा. बट शॉर्ट टर्म में दिस इज समथिंग विच इज not there, right? This was precisely the reason where we said that you need two asset classes, two products basically. So the first one is the equity mutual funds in which you can participate through a lump sum or an SIP. जिसका रोल है कि भाई ग्रोथ अल्फा जनरेशन होना चाहिए, बट वो एक ही कंडीशन में चल सकता है, वो है बुल मार्केट, राइट? जहां पे तेजी है तो if Nifty delivers 12 to 14%, my mutual fund should be able to deliver 14 to 17%, which is an alpha of 2 to 3%. बट इसकी अगर प्रोबेबिलिटी देखें तो हमने बैक टेस्टिंग की लास्ट 22 ईयर्स की, कि हर साल हर दिन अगर किसी ने लास्ट 22 साल में अगर 5 साल के पीरियड के लिए इन्वेस्ट किया होता तो कितनी बार उसने 12% से ज्यादा रिटर्न बनाए हैं. तो द प्रोबेबिलिटी इज 49%. मतलब 1 out of 2 times you would have made 12%. This also means that 1 out of 2 times you would have made less than 12%. मतलब सिंगल डिजिट की प्रोबेबिलिटी भी 50% है. That's a very high probability. ये प्रोबेबिलिटी अगर ज्यादा होती तो शायद you didn't require a plan B, but this probability is very high that 1 out of 2 instances the client might have less than 12%, less than double digit returns. That's where we said that you need to have a plan B. You need to add something to this overall proposition so that जो क्लाइंट की जर्नी है वो स्मूथ रहे. इसके लिए हमने ऐड किया था स्ट्रक्चर प्रोडक्ट. स्ट्रक्चर प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट लमसम होता है, बट ये क्या करता है, ये रिटर्न्स एक्सेलरेट करता है और रिस्क रिड्यूस करता है. ये तीनों सिनेरियो में भी चलता है, बुल मार्केट, रेंज बाउंड मार्केट एंड बेयर मार्केट. व्हाट इट सेज इज दैट 3 to 5.5% पर एनम मूवमेंट पे दिस प्रोडक्ट डिलीवर्स 13 to 15%. तो मतलब मार्जिनल मूवमेंट, सिर्फ अगर निफ्टी 3 से 5.5% अगर पर एनम ऊपर जाती है, ये प्रोडक्ट 13 से 15% डिलीवर करता है और इसकी प्रोबेबिलिटी भी 85% है. सो ये क्या कर रहा है, एक तो रिटर्न्स एक्सेलरेट कर रहा है क्योंकि एट मार्जिनल मूवमेंट्स ये डबल डिजिट रिटर्न्स दे रहा है. ये रिस्क भी कम कर रहा है, आई विल शो यू द रिस्क आल्सो ऑफ दिस, एंड इसकी प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा है. सो दिस कॉम्बिनेशन, अगर ये मैं कॉम्बिनेशन करता हूं, right, this combination has a probability of 67%. Means what you are doing is you are increasing the probability of the client making double digit returns consistently at a reduced risk. That's what this proposition gives me. इससे क्या होगा ना कि client will stay invested even when the market doesn't perform, the client will stay invested, and this is how you can ensure that the client will enjoy the long-term wealth creation journey. He will enjoy the long-term wealth which he can create by staying invested in equity and by adding plan B to his portfolio so that his long-term wealth creation journey is intact and he can make more returns. This also benefits you as a partner because you can get more monies also from the client because his journey is much more smoother. एक रॉकी जर्नी में शायद क्लाइंट और पैसा नहीं ऐड करे, बट अ स्मूथ जर्नी इज समथिंग व्हिच हेल्प्स वेयर यू कैन गेट मोर मनीज आल्सो फ्रॉम द क्लाइंट एंड द क्लाइंट आल्सो मेक्स अ साइजेबल वेल्थ. दैट्स व्हाई ये प्लान बी ऐड किया है. आई थिंक ये बहुत क्रिटिकल है
दैट क्यों होना चाहिए स्ट्रक्चर प्रोडक्ट, बिकॉज अगर मार्केट 14% हर साल दे रहा होता तो कोई प्लान बी की जरूरत नहीं होती, बट मार्केट नहीं देता है 14%। ओनली 50% चांस है कि 14% देगा, 50% टाइम नहीं देगा, और अगर जब नहीं देगा मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्लाइंट विल लीव हिज लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन जर्नी। इसीलिए प्लान बी की जरूरत है। प्लान बी भी ऐसा जो रिटर्न्स डबल डिजिट दे। आपका एफडी प्लान बी नहीं हो सकता, या कोई बॉन्ड प्लान बी नहीं हो सकता, या कोई गोल्ड प्लान बी नहीं हो सकता, क्योंकि वो सिंगल डिजिट रिटर्न्स दे रहा है। वो आपको 7, 8, 9, 10% से ज्यादा रिटर्न्स कोई नहीं दे रहा है, तो वो प्लान बी नहीं होता है। प्लान बी वो होता है जो ओवरऑल पोर्टफोलियो को डबल डिजिट रिटर्न्स पे पुश करे इवन व्हेन द मार्केट डजंट वर्क। That's where structure product comes in, because it delivers double digit returns even when the market doesn't deliver that 13-14%. इसीलिए ये structure product has been added, and that's the proposition which we have. Moving to the next point, what is structure product? I think so ये question काफी आता है, but first important is why structure product. I hope everyone is clear कि क्यों structure product होना चाहिए. Now let's move to the next one. What is structure product? ये है क्या? So we all have heard of the bonds, that bonds debentures है जिसमें कूपन फिक्स्ड होती है, कि इन्वेस्ट करने के पहले मुझे पता है कि यार ये बॉन्ड ये कंपनी का है जो मुझे 6%, 7%, 8% देगा पर एनम। फिक्स्ड कूपन होता है, एंड आई नो मैच्योरिटी पे मुझे प्रिंसिपल भी मिल जाएगा और मेरा इंटरेस्ट भी मिल जाएगा। नॉन पीपी स्ट्रक्चर प्रोडक्ट, दैट इज नॉन प्रिंसिपल प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर प्रोडक्ट, दिस इज ऑल्सो अ डिबेंचर ओनली। द ओनली डिफरेंस इज कि इसमें कूपन फिक्स नहीं है, इसमें कूपन कंडीशनल है, कंडीशनल ऑन द मूवमेंट ऑफ निफ्टी, राइट? बट दिस कंडीशनैलिटी इज नोन टू मी टुडे। सो ऐसा नहीं है कि क्लाइंट को पता नहीं है, दिस कंडीशनैलिटी इज नोन टू द क्लाइंट बिफोर इन्वेस्टिंग। मतलब इन्वेस्ट करने के पहले मुझे पता है कि यार मेरा नेक्स्ट, अगर स्ट्रक्चर प्रोडक्ट में मुझे रिटर्न्स बनाना है तो व्हाट इज माय टारगेट, राइट? So let's take a simple example that amount invested is 100 rupees. The expectation from the structure product is that it moves 5.6% per annum, which is 33% absolute. The product delivers 14.2%. So your 100 rupees invested will become 200. मतलब 5 years में your money doubles, which is at 14.2%. Of course, there is a cap on the upside. So if Nifty moves up by 12% per annum also, or 14% per annum also, or 16% per annum as well, the product will deliver only 14.2%. Means your 100 will become 200. On the downside, there is a capital protection up till minus 10%, which is 2% per annum भी अगर नीचे जाती है निफ्टी तो भी product will protect your capital and give you your 100 rupees back. मतलब आपने 100 रुपया डाला था, आपको 100 रुपया वापस मिल जाएगा। So ये conditionality को अगर और easy way में समझना है तो I'll give you an example that say Nifty today is at 22,000. So 5 साल बाद निफ्टी अगर यहाँ से 22,000 से 33% ऊपर होती है, which is 33% अगर ऊपर जाती है यहाँ से, which is approximately 29,500 odd level, 29, I think so 300 odd level. You invested 100 rupees, your 100 will become 200. Now same case अगर आप देखते हो कि आज अगर आप 100 रुपया डालते हो 22,000 के लेवल पे, अगर आप निफ्टी में इन्वेस्ट करते हो, या अगर स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो, या म्यूचुअल फंड में करते हो, या पीएमएस में करते हो, of course they have dependency on nifty. तो निफ्टी अगर 22, मतलब अगर 41, 42,000 अगर नहीं जाएगी निफ्टी, तो आपका पैसा ना म्यूचुअल फंड में डबल होगा, ना पीएमएस में डबल होगा, ना स्टॉक में डबल होगा, ना एआईएफ में डबल होगा, राइट? निफ्टी विल हैव टू गो मिनिमम 40, 41, 42,000, जब जाके आपका पैसा डबल होगा। स्ट्रक्चर प्रोडक्ट में आपका पैसा डबल हो जाएगा 29,300 पे। दिस इज व्हाट स्ट्रक्चर प्रोडक्ट डज, इट एक्सेलरेट्स योर रिटर्न्स। On the downside also, it is giving you a capital protection till minus 10%, right? बाकी हर जो इक्विटी क्लास का जो आप इन्वेस्टमेंट करोगे उसमें नेगेटिव रिटर्न होगा अगर 5 साल बाद निफ्टी 10% नीचे होती है, बट दिस विल प्रोटेक्ट योर कैपिटल अप टू minus 10%. So that's what structure product does. Of course, there is a cap on the upside that अगर 5 साल बाद निफ्टी अगर 50,000 भी होती है तो भी यहाँ पे आपका पैसा डबल ही होगा. So there is a cap on the upside. That's why we don't recommend or suggest that you allocate 100% to a structure product. You allocate a 50% or a 40% or a 50% to a structure product, and the balance goes towards mutual fund. This combination is something which we are saying that will work in all market scenarios. So risk, जैसे मैंने बताया था कि भाई risk कम होता है, तो if you look at the standard deviation of the structure product. Now, what do I mean by standard deviation? Standard deviation basically is a risk measure. ये बताता है, एक रेंज बताता है कि यार मेरा रिटर्न्स कितना डिविएट हो सकता है फ्रॉम माय एक्सपेक्टेड आउटकम. तो सपोज एक्सपेक्टेशन है मेरा कि यार मुझे इस मेरे पोर्टफोलियो पे 14% रिटर्न मिलने वाला है,
and say if the standard deviation is 12%, what it says is 14 plus 12, 14 minus 12, which is 2 to 26. ये रेंज मिल गई कि मेरे रिटर्न्स जो है इस रेंज में रहेंगे from 2% to 26%, right? That's how much my portfolio will swing because of the standard deviation. तो जितना standard deviation कम होगा उतना ही मेरा पोर्टफोलियो का स्विंग कम होगा, उतनी ही मेरी पोर्टफोलियो की वोलेटिलिटी कम होगी, उतना ही मेरा पोर्टफोलियो का रिटर्न्स जो है वो ज्यादा कंसिस्टेंट होगा. So lower the standard deviation, the better it is. The standard deviation of the Wealth Plus portfolio, which is a combination of mutual funds and structured products, is around 8.75%. Now, if you compare this with, first, let's say we compare it with stocks. कि clients के पास stocks होते हैं. तो हमने top 10 large cap stocks लिए थे और top 10 mid cap stocks लिए थे. And 60-40 allocation दिया था. उसका standard deviation था 24%. Wealth Plus portfolio का standard deviation is 8.75%. So you can potentially reduce, if you have any client who has invested in stocks, उसका portfolio का risk ही मैं 64% कम कर रहा हूँ. I'm not reducing the returns, I'm actually reducing the risk. मतलब risk, when you look at in number terms, I think so it creates a much better impact because high risk, low risk, medium risk is something which is very subjective. What might be low risk for you might be high risk for me, right? So number terms में अगर अपन risk measure करते हैं and standard deviation is giving me that measurement tool, if we actually show this to a client that sir अगर stock में है तो आपका standard deviation is say 20, 21, 22, 25, 30%, 40% भी देखा है हमने, और मेरे पोर्टफोलियो में आप मूव करते हो तो आपका स्टैंडर्ड डिविएशन कितना कम होता है, उसकी जर्नी इसलिए स्मूथ हो सकती है क्योंकि उतना ही कम वोलेटाइल होगा उसका पोर्टफोलियो. सो बाय if you compare purely on risk, my Wealth Plus portfolio has a standard deviation of approximately 9%. It can reduce, you can reduce actually your client's stock portfolio risk by 64% if you move to Wealth Plus. If you take mutual funds, I've taken my mutual fund portfolio, the standard deviation can be reduced by 34%. And if I take Nifty, which is the benchmark से भी इस portfolio का risk 30% कम है. So I am taking risk which is 30% lower than the Nifty, right? And I am expecting to deliver much more than the Nifty because based on the alpha in the mutual funds, and this is giving me 14%, right? So this proposition is something which is created where आपके क्लाइंट की प्रोबेबिलिटी बढ़ती है, रिस्क कम होता है और रिटर्न्स एक्सेलरेट होते हैं एंड द जर्नी इज मच मोर स्मूदर. नाउ लेट्स लुक एट कि ये परफॉर्मेंस कैसे करेगा ओवर द नेक्स्ट 5 years. So there can be 3 scenarios, right? It can be a bull market, range bound market, or a bear market. So let's look at bull market. That if over the next 5 years, if Nifty delivers 12% per annum, my mutual fund should deliver 15%. My structure product will deliver 14%. So if Nifty delivers 12%, the structure product, the overall portfolio delivers 14.6%. The client will stay invested. The client is happy, right? You will get more monies from the client. This is an ideal scenario, but इसकी probability 50% ही है. इसकी अगर 100 होती तो then the scenario would have been different, but this probability is only 50%. 50% of the times, the market will be either range bound or the market will be negative. Now, if the market is range bound, when Nifty delivers say 5-6% per annum, the mutual fund will deliver single digit, be it 6, 7, 8, 9. It will not deliver double digit returns. It will deliver single digit returns. Be it mutual funds, be it PMS, be it stocks, be it AIS, everything would deliver single digit. So with this allocation, your overall portfolio is still delivering 11.5% or still delivering double digit return, beating HNI inflation. So when we speak with the client and we tell him, sir, that the market hasn't, there are high chances the client is invested. There are high chances the client will add more money as well. So this scenario is also where it is a win-win for the client, win-win for you as well. Well, let's say when the markets are bearish, when the markets are negative after 5 years, the probability is very low. But even if it is negative, say Nifty is down, your investments in say equity, be it direct equity, stocks, mutual funds, PMS, everything will be negative. Nothing will be positive, right? But structure product will protect your principal up to a certain level. So it is also giving you a downside cushion, right? That even when the markets are down, this is providing me a cushion and not participating on the downside up to a certain level. So that's why this combination of mutual funds and structured product, when the Nifty is negative, this portfolio is flattish.
That's where we can again go back to the client and we can tell him, sir, that everything is down, but at least your portfolio is not negative, or it's marginally negative or marginally positive. That will create a much better impression. The client will have much more confidence and conviction to stay invested, remain invested. And as we've seen, right, there have been cycles. There have been cycles when the markets have been negative, but there have been cycles where the market has delivered. There have been bumper years, as we've seen, right? Every 10 years, we've seen a bumper year. And if the client stays invested, we know he will make money and his long-term wealth creation will happen. So this proposition, as I said, that these are the scenarios which can happen in the next 5 years, be it a bull market, range bound market, or bear market. This proposition of plan A and plan B works across all market cycles. Now, how structure product is designed, I think so. We covered the why structure product is required. What is the product? I think so. We covered that. Now we get into how this product is designed, right? This is something which is critical. It is important for you to understand, right, that how this is created. So let's take first is the construct of the structure product. तो ये बनता कैसे है? काफी बार क्वेश्चंस आते हैं पार्टनर्स के भी और क्लाइंट के भी कि यार आप 6% पे आप 14% कैसे दे रहे हो, मतलब आप क्या कर रहे हो? This slide will explain that how this product is created. It's a simple construct. It is not something which is very complicated. It's very simple, right? There's a proper strategy in place basis which ये product का जो payoff है वो बनता है. एक simple product लिया है मैंने to explain the construct so that it's easier for everyone to understand. This is the name of the product is protected call 47.5. इसमें the target Nifty growth is 2% per annum. मतलब अगर Nifty 2% per annum 3 साल का प्रोडक्ट था, 38 months का प्रोडक्ट था, which is 1160 days. What this product says is that if Nifty delivers 2% per annum, the product delivers 13%. मतलब absolute terms में देखें तो 6% absolute movement of Nifty in 3 years, the product delivers 47.5%. मतलब आपने 100 रुपया डाला था, आपका 100 will become 147.5. इसमें कैपिटल प्रोटेक्शन -12.5% तक था. -12.5 अगर हो गई निफ्टी आफ्टर 3 years, so your principal is protected. Below that, you would start making negative return. So these are the broad specs of the product. जैसे अभी वाला जो प्रोडक्ट मैंने बताया था कि 33% पे 100 डिलीवर करता है, this product का specs was 6% पे 47.5 दे रहा है. अभी वाला प्रोडक्ट is a 5-year product. The product which we are looking at, the construct, it was a 3-year product, 3 year 2 months का प्रोडक्ट था. तो ये जो है ये स्पेक्स है. नाउ ये बनता कैसे है? इट्स अ वेरी सिंपल 3-step process. So step 1 कि the client gives 100 rupees, ये 100 rupees मैं मेरी NBFC को दे देता हूँ at 9% for 1160 days. This is a simple bond transaction. जैसे आप बॉन्ड का ट्रांजैक्शन करते हो कि 100 रुपया लिया है आपने NBFC इशूइंग कंपनी को दे दिया है, जो इंटरेस्ट रेट है तो 9% was the interest rate at that time for the entire tenure, which is 1160 days. तो 100 rupees NBFC को दे दिया for 9% at 1160 days. This will become 131. मतलब अगर 100 रुपए को आप कंपाउंड करोगे at 9% for 3 years and 2 months, it will become 131. This is step 1. This is a simple plain bond step. Now, step 2 is where the conditionality is built. Now, step 2 में हमने क्या किया है? Basically यहाँ पे put options sell किया है. Now, put options क्या होते हैं? उसको एक simple मैं example दे देता हूँ कि we all know about car insurance, right? We all, whenever, so if you buy a car insurance, you have to pay the premium upfront. कि यार 1 साल का अगर मुझे इंश्योरेंस लेना है कार का, तो मुझे प्रीमियम देना पड़ता है जो मैं इंश्योरेंस कंपनी को देता हूँ, वो मैं पहले देता हूँ, फिर जाके वो मुझे नेक्स्ट 1 साल के लिए कवर करता है. और वो क्या बोलता है, गाड़ी का जो इंश्योरर है, जो इंश्योरेंस कंपनी है, वो क्या बताती है कि यार अगले 1 साल आपकी गाड़ी में कोई भी एक्सीडेंट हुआ तो द इंश्योरेंस कंपनी विल पे द डैमेजेस. अगर कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, so then the premium is something which you lose as a buyer, right? Same option is also available. Same insurance like option is also available for your portfolio. कि अगर आपने इन्वेस्ट किया है 100 rupees, right? तो आपको अगर इंश्योरेंस चाहिए तो आपको इंश्योरेंस क्यों चाहिएगा कि अगर नीचे आया मार्केट तो देन यू रिक्वायर एन इंश्योरेंस. अगर मार्केट ऊपर गई तो आपको इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है, बिकॉज देन यू स्टार्ट मेकिंग मनी. अगर नीचे आई मार्केट तो आपको इंश्योरेंस की जरूरत होती है, राइट?
So these options are also available on the exchange where you can buy a simple put option. Put option is like buying an insurance for your portfolio. तो स्टेप 2 में मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, बेसिकली यहाँ पे मैं इंश्योरेंस कंपनी बन रहा हूँ जहां पे मैं इंश्योरेंस दे रहा हूँ फॉर 2.5 पोर्टफोलियोज एट 106 का लेवल. मतलब निफ्टी का लेवल जो मेरा स्पेक्स था कि यार 6% ऊपर जाएगी तो 47.5% का रिटर्न मिलेगा, ये स्पेक्स के हिसाब से मैं क्या कर रहा हूं, करंट लेवल पे मैं इंश्योरेंस नहीं प्रोवाइड कर रहा हूं, मैं 106 के लेवल पे इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहा हूं. मतलब क्या कि अगर 106 के ऊपर रही तो कोई एक्सीडेंट हुआ नहीं, एक्सीडेंट हुआ नहीं तो और कुछ ना इंश्योरेंस कंपनी को पैसा मिलेगा ना इंश्योरेंस कंपनी को कुछ देना पड़ेगा, राइट. अब अपने यहाँ पे अगर कोई कार इंश्योरेंस में अगर कोई एक्सीडेंट नहीं होता है तो वी डोंट पे एनीथिंग एक्स्ट्रा, राइट, इन द बिटवीन टू द कार इंश्योरेंस. वॉट एवर इज देयर इज, जो भी अपफ्रंट प्रीमियम हो गया उसके आगे कुछ नहीं होता. तो सेम थिंग I am providing, what I am doing here is I am providing insurance at 106 ka level, right, for a 3-year maturity, and I am giving insurance to 2.5 portfolios. So when I provide insurance at 106 level, what do I get? I get premium upfront, right? Now, a single put ka premium is approximately 5 rupees, so I get 12.55 rupees. That is something which I get upfront when I provide insurance to 2.5 portfolios. राइट. दिस स्टेप 2 इज वेयर द कंडीशनैलिटी इज बिल्ड. ये कंडीशनैलिटी वाला स्टेप यहीं पे बिल्ड हुआ है कि मैंने 106 के लेवल पे इंश्योरेंस प्रोवाइड किया है कि अगर 106 के ऊपर गया तो कोई एक्सीडेंट हुआ नहीं तो मुझे और कुछ मिलने वाला है नहीं, मुझे और किसी को कुछ देना नहीं है. बट अगर 106 के नीचे आया तो देन दैट्स वेयर द एक्सीडेंट हैज हैपेंड, एंड इफ द मार्केट इज बिलो 106 देन प्रोबब्ली आई विल हैव टू पे दैट टू आफ्टर 3 years. दिस इज वेयर द कंडीशनैलिटी इज बिल्ड. Now step 3 is where जो मुझे 12.5 रुपया प्रीमियम आया है, ये मैंने फिर से सेम सिंपल बॉन्ड ट्रांजैक्शन हो गया कि 12.5 फिर से मैंने एनबीएफसी को दे दिया एट 9% फॉर 1160 days, which will become 16.5. तो इट्स अ सिंपल 3 स्टेप प्रोसेस. ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि फिर से एक्सप्लेन करता हूँ कि फर्स्ट स्टेप बॉन्ड ट्रांजैक्शन 100 रुपीज एनबीएफसी को दे दिया एट 9% फॉर 1160 days इज 131. कंपाउंड करोगे तो स्टेप 2 में कंडीशनैलिटी बिल्ड की है जहां पे मैंने इंश्योरेंस दिया है 2.5 पोर्टफोलियोज को 106 के लेवल पे. तो जब मैं इंश्योरेंस प्रोवाइड करता हूं तो मुझे प्रीमियम मिलता है अपफ्रंट. दैट प्रीमियम इज अप्रोक्सीमेटली 12.55 रुपीज. स्टेप 3 में मैंने क्या किया कि जो 12.5 रुपया मिला ये मैंने फिर से एनबीएफसी को दे दिया फॉर 1160 days एट 9%. तो if I add these two, 131 plus 16.5, which is equal to 147.5. This is the only payoff which I get, right? इसके ऊपर और मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है. मार्केट ऊपर जाए या मार्केट 106, 108, 110, 115, 120 कुछ भी हो जाए, मुझे इसके ऊपर नहीं मिलने वाला है, राइट. मार्केट अगर नीचे आया 106 के नीचे आया तो एक्सीडेंट हुआ, तो दैट्स वेयर द स्टेप 2 इज वेयर आई विल हैव टू पे probably to the portfolios which I have insured. तो this is the construct. ऐसे construct बनने से ही ये पे ऑफ दिखता है. तो this is a sample payoff. तो उस टाइम पे निफ्टी was around 11,600, right? तो 11,600 से the expectation was कि अगर निफ्टी 3 साल बाद 6% ऊपर जाती है, which is 12,296, the product will deliver 47.5. तो अपना पे ऑफ देखा था 131 plus 16.5 is 147.5. That's the amount which the NBFC will give. Step 2 is where the conditionality is built. जहां पे अगर एक्सीडेंट हुआ तो मुझे देना पड़ेगा, बट एक्सीडेंट नहीं हुआ तो मुझे नहीं देना पड़ेगा. तो अगर निफ्टी 6% के ऊपर है तो एक्सीडेंट हुआ नहीं है, सो द प्रोडक्ट रिटर्न्स आर 47.5. दैट्स द मैक्स रिटर्न. इसके ऊपर रिटर्न नहीं मिलने वाला है, मतलब मुझे और कोई पैसा नहीं मिलने वाला है जो मैं क्लाइंट को दे सकता हूं. That's why there is a cap on the upside in the structure product कि यार एक लेवल के ऊपर वो और रिटर्न्स नहीं दे सकता बिकॉज और कुछ मिलने ही नहीं वाला है उसको. That's why 47.5 in this case, that's the max return. It will not deliver more than that. Now let's look at the example where the accident happens. Accident मतलब निफ्टी 3 साल बाद 106 नहीं है 105 है, मतलब एक्सीडेंट हुआ है, right? So if Nifty is at 105, then there is a 1% का ड्रॉप, मतलब 106 और 105 ₹1 का डिफरेंस है, और मैंने 2.5 पोर्टफोलियो इंश्योर किए थे, तो दैट्स व्हाई आई हैव टू पे 2.55 रुपीज टू फॉर एवरी 1 रुपी ड्रॉप बिलो 6%. मतलब 6%, 106 के नीचे जितना भी
निफ्टी का लेवल होगा उसका इंटू 2.55, दैट इज समथिंग विच आई हैव टू पे, क्योंकि मैंने 2.5 पोर्टफोलियो इंश्योर किए हैं। तो इसलिए यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 5% पे इट इज 44.95, इट इज नॉट 47.5। वाई? बिकॉज 131 जो पहले एनबीएफसी का प्लेन बॉन्ड ट्रांजैक्शन था, फिर 16.5 जो प्रीमियम मिला, ये 147.5 तो मिल गया। बट स्टेप 2 में एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट हुआ तो मार्केट कहा था 105, मैंने बोला था 106 के ऊपर गया तो कुछ नहीं है, 106 भी रहा तो भी कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है, बट 105 हुआ मतलब एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट हुआ तो कितना डिफरेंस है? 1 रुपए का डिफरेंस है, पर मैंने 2.5 पुट बेचे हैं तो आई हैव टू पे 2.55 रुपीज। सो 47.55 माइनस 2.55 इज 44.95। वैसे ही ये रिटर्न्स ड्रॉप जो है 2.55 से हर 1% पे होगा। मतलब अगर निफ्टी सेम लेवल पे रहती है, मतलब जहां से स्टार्ट किया था 11,600 से, और 3 साल बाद भी 11,600 ही है, तो 6%, 106 से 6% नीचे है, तो 6 इंटू 2.55 विच इज अप्रोक्सीमेटली 15 रुपीज। तो 47.5 माइनस 15 इज 32.2। तो 100 प्लस 32.2, 132 is something which I'll pay to the client. This is how the payoff is created. यही 2.55 नीचे जाते रहेंगे तो 12.63% तक प्रिंसिपल प्रोटेक्शन है, जहां तक कैपिटल प्रोटेक्टेड है क्लाइंट का। इसके नीचे गया तो देन ही स्टार्ट्स लूजिंग मनी। सो दिस इज हाउ द प्रोडक्ट इज डिजाइंड। आई थिंक सो ये एक चीज जो है, जो एज अ पार्टनर आई थिंक सो यू शुड नो दिस। Most of the times in my experience the client doesn't ask much, he just wants to understand the payoff structure as such, but you should know it. It is not कि ऐसा कुछ है कि हम कुछ ट्रेडिंग एक्टिविटीज कर रहे हैं या वी आर टेकिंग बेट्स ऑन द मार्केट्स और समथिंग, ऐसा कुछ नहीं है। देयर इज अ प्री डिफाइंड स्ट्रैटेजी एंड दिस स्ट्रैटेजी वी बीन डूइंग फॉर द लास्ट 10 years। ये 10 years से ये स्ट्रैटेजी कर रहे हैं, तब जाके ये प्रोडक्ट का पे ऑफ बनता है, एंड उस पे ऑफ में सब कुछ कवर्ड है। दैट्स व्हाई देयर इज अ कैप ऑन द अपसाइड, बिकॉज व्हेन आई सेल पुट ऑप्शंस आई डोंट गेट एनीथिंग एल्स। मुझे प्रीमियम स्टार्ट में जो मिल गया वो मिल गया, उसके आगे कुछ नहीं मिलता। इसीलिए अपसाइड पे कैप है कि मार्केट अगर यहाँ से इस केस में अगर जैसे 15,000 20,000 भी जाता तो भी ये 47.5 ही रिटर्न्स देता। So that's how the product is designed. It's a simple 3-step process where first is the bond transaction, second is where the conditionality is built by using options, right? Put options का strategy है जहां पे हम put sell करते हैं, where we are the insurance company, right? And third step again is a simple bond transaction कि जो भी प्रीमियम मिला है वो मैंने फिर से एनबीएफसी को दे दिया है, which is again compounding at 9% for the tenure, right? And this is how the construct is कि यार जैसे मेरी कंडीशनैलिटी जैसे बिल्ड हुई है उसके हिसाब से ये प्रोडक्ट का पे ऑफ बनता है। नाउ द क्वेश्चन इज कि यार ये पे ऑफ तो ठीक है, बट हाउ दी एनबीएफसी विल डिलीवर 131, वो देगी कि नहीं, या 12.5 से 16.5 वो कैसे देती है? तो लेट्स लुक एट दी बैलेंस शीट ऑफ द एनबीएफसी। वो एनबीएफसी क्या करती है, आई थिंक सो वो क्रिटिकल है समझने के लिए। सो how your investments are safeguarded, balance sheet of the NBFC. So first let us understand ये issuing entity है क्या. This is Anand Rathi Global Finance Limited, which is the issuing entity. This entity basically was formed to issue structured products to the client. So most NBFCs are into a business of borrowing and lending. 100 रुपया borrow करती है, right? And the borrowing जो है वो multiple route से करती है. It can be term loan, it can be bonds, it can be structured products, it can be equity, multiple options होते हैं एनबीएफसी के पास, राइट? सो दोज आर मोर एसेट ड्रिवन एनबीएफसी, जो क्या करती है, मल्टीपल रूट से बोरो करती है एंड लेंड करती है, एंड डिफरेंस इज समथिंग व्हिच द एनबीएफसी अर्न्स, राइट? Most NBFCs are asset driven. My NBFC is actually a liability driven NBFC because the primary operation of ARGFL is to issue structured products, which is plan B for my clients. Now, as I said, this NBFC was formed only to issue structured products, which is plan B for my wealth clients. Now, my wealth business is already a listed business, right? So this NBFC is basically aiding my wealth business, right? Which is the cash cow business for the group. So it is a more liability driven NBFC rather than an asset driven NBFC, right? It is borrowing only through the structured product route. So we don't borrow through any other route. We borrow only through the structured product route. एंड जो भी बोरो किया है उसमें से, तो अगर 100 रुपया में बोरो कर रहा हूं विच इज थ्रू द स्ट्रक्चर प्रोडक्ट रूट, ओनली 31% इज लेंड, मतलब 31% ही लोन दिया है, बैलेंस तो इन्वेस्टमेंट्स है। तो मेरी 10,000 करोड़ की बुक है, उसमें से सिर्फ 3,000 करोड़ का मेरा लोन बुक है, बाकी तो ऑलमोस्ट 7,000 करोड़ तो मेरे इन्वेस्टमेंट्स है।
आप कोई भी एनबीएफसी ले लो, हर एनबीएफसी का जो एसेट ड्रिवन एनबीएफसी है उसमें से अगर जो 100 रुपया बोरो कर रहे हैं तो वो भी मल्टीपल रूट से करते हैं, और उस 100 रुपए में से वो लोग 70 to 80, 80 to 90 रुपीज लेंड करते हैं. That's how most NBFC functions because they are into a business of borrowing and lending. My NBFC's objective is very different because the primary operation is to issue Plan B for my wealth clients, because we feel this combination of mutual fund and structured product is something, if you can manage it effectively, that's something which is good enough for you to grow your wealth, right? So that's why only these two products, and that's why this NBFC is formed to issue only structured product to our clients. इसीलिए मेरी लोन बुक सिर्फ 30 रुपीज है. मतलब अगर 100 रुपया मैं बोरो कर रहा हूँ स्ट्रक्चर प्रोडक्ट से, तो ओनली 31 रुपीज लोन है, बैलेंस तो इन्वेस्टमेंट्स है. एंड ये इन्वेस्टमेंट्स भी अगर देखें तो ऑल लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स है. सो ऑलमोस्ट 49%, मतलब 4,800 crores इज इन जीसेक, डेट म्यूचुअल फंड्स, डेट इंस्ट्रूमेंट्स, विच इज लिक्विड. ये मैक्स T+5 में मेरे अकाउंट में आ सकता है पैसा, ये इतना लिक्विड है, राइट. इक्विटी इज अराउंड 10%, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स. बैंक एफडी एंड बैंक बैलेंस इज अनदर 500 crores. मतलब 65% of my balance sheet of my assets are investments in such instruments which are very liquid, जहां पे मेरा T+5 में मैक्स पैसा आ सकता है, राइट. दैट्स हाउ लिक्विड माय बैलेंस शीट इज. ऐसा बैलेंस शीट किसी का नहीं होगा, कोई एनबीएफसी का नहीं होगा, बिकॉज दे आर इनटू अ बिजनेस ऑफ बोरोइंग एंड my aim, as I said, is to support my wealth management business. So that's where the loan book is. The loan book is 30%, 31%. It's majorly in three categories. That is last, loan against securities. The largest is loan against property. Then it is loan against security, and a very small component is construction finance. So loan also is only in three categories. It is not कि मैं 15 कैटेगरी में लोन दे रहा हूँ, only 3 कैटेगरी में लोन देता हूँ, right? That's how my balance sheet is. That's how I am managing this balance sheet. So this is critical कि यार ये 131 कहाँ से आएगा. तो ये ऐसे आएगा कि यार 50% तो लिक्विड है, बाकी 10%, 65% लिक्विड है, 30% ही लोन है. So that's how the business is, of course. And there the promoter has the maximum holding in the business, right? So for default, if it has to happen, the promoter will also suffer because he has the maximum holding in it. तो अगर कोई डिफॉल्ट होता है तो मेरा वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस जो लिस्टेड ऑर्गेनाइजेशन है, इट्स अ लिस्टेड कंपनी राइट नाउ, राइट. सो इफ समथिंग हैपेंस एंड इफ आई डोंट पे टू माय क्लाइंट, the company will suffer, the valuations will suffer, the existing clients will also suffer, right? So it is not that only the client is suffering and I am not suffering. We all are suffering here. So that's why the balance sheet is managed very differently of Anand Rathi Global Finance Limited, because its aim is to actually support the wealth management business. Till date, we've never had any delay or default in any payments, right? I'll show you the performance also, that we've issued 3,080 issuances हुए हैं from 2013 इन स्ट्रक्चर प्रोडक्ट. मतलब हमने 19,600 करोड़ का इश्यूएंसेस किया है, इतना क्लाइंट्स ने पैसा दिया है. ये 3,080 प्रोडक्ट्स में से 1,430 प्रोडक्ट्स मैच्योर हुए हैं. मतलब ये हमने इशू किए, इनको 3 साल 5 साल खत्म हुए, एंड the money has gone back to the client. So if I just give you a summary of what has happened in the matured products, so 1428 products थे, उसमें से 7,450 करोड़ इन्वेस्ट किया था क्लाइंट्स ने. मैच्योरिटी पे 11,800 करोड़ वापस दिया है क्लाइंट को. 4,350 करोड़ का प्रॉफिट डिलीवर किया है. एंड दी performance, that is the returns which these structured products has delivered, is 15.1%, right? Now key data points is that 1380 structured products जो है, मतलब 1428 जो है, everyone has given principal back. काफी questions आते हैं कभी कभी कि आप प्रिंसिपल प्रोटेक्शन क्यों नहीं करते, आप और ज्यादा प्रिंसिपल प्रोटेक्शन क्यों नहीं देते. See, point is it is not required. This data actually substantiates that 1428 में से 1428 ने प्रिंसिपल वापस दिया है, तो प्रिंसिपल लॉस तो किसी में हुआ ही नहीं है. 98% ने मिनिमम 6% से ज्यादा दिया है, मतलब आपके एफडी रिटर्न से ज्यादा तो 98% प्रोडक्ट्स ने दिया है. 94% प्रोडक्ट्स ने तो मैक्स कूपन दिया है. मतलब जो प्रोडक्ट का आईआरआर था 13 था, 14 था, 15 था, 16 था, जो भी प्रोडक्ट का आईआरआर था, 94% हैव डिलीवर्ड दैट प्रोडक्ट. सो दैट्स व्हाई प्रिंसिपल प्रोटेक्शन इज समथिंग व्हिच इज नॉट रिक्वायर्ड, बिकॉज इफ आई हैव टू गिव प्रिंसिपल प्रोटेक्शन देन आई हैव टू कर्ब ऑन दी आईआरआर. मेरा आईआरआर कम हो जाएगा. आईआरआर कम हो जाएगा तो वो प्लान भी जैसे चलेगा नहीं. तो मुझे प्लान भी देना है क्लाइंट के लिए, बिकॉज दैट्स व्हाट विल हेल्प हिम स्टे इन्वेस्टेड.
I don't need to give a product to a client के सर ये ले लो आप फिक्स प्रिंसिपल है 10% मिल जाएगा. That is not plan B, that is just product. And वो प्रोडक्ट कुछ नहीं करने वाला है उसके पोर्टफोलियो पे. So we have to uh, also look at that what value it adds to the overall portfolio if we are adding plan B to the client's portfolio. That's why the principal protection is not there. We've never done any principal protected products in our entire tenure. And as we can see, 100% of the products has delivered the principal back. 98% has delivered more than FD. I think so that gives good enough comfort to our clients because clients mostly उसी से compare करता है कि यार FD में तो मुझे इतना मिलता था. 98% है. So that much risk I think so a client can take it. 2% का risk है शायद सर कि आपको कम मिले कि 6% से कम मिले. That's the risk which it has, I think so. But this is something which is not a 1 year performance or a 2 year performance. This last 10-year performance, we've been doing this as you all know, we do only mutual funds and structured products. So there's a lot of research and there is a huge product team which is of 125 members, which is doing research only on mutual funds and structured products. Right now, I'll give you the product details, the primary product which is available for trade. I'll just explain this as well. So as it shows here, the product, the initial level is 21,900. So generally, whenever the trade date is, so this primary product trade is always on every Tuesday of the month, right? So Tuesday, whatever the closing of Nifty is, say Nifty closing is 721,731. 150 points are added to it and round up to the next 100. So 21,731 plus 150, which is 21,881. Round up to the next 100, which is 21,900. That would be my starting point, which is, it is mentioned here. Okay, 21,900 ka starting point hai. If Nifty is up by 33% absolute after 5 years, matlab 29,127 means 5.6% per annum, the product delivers 14.2%, 14.24%, right? If Nifty goes to 32,000, 35,000, 40,000, 50,000, still your product will deliver 14.2 only, right? On the downside, minus 10%, मतलब 19,700 तक capital protection था यहाँ पे, where even if Nifty is negative, you get your principal back. If Nifty goes below 10% after 5 years, then you start losing money, which is mentioned here. ये फाइनल फिक्सिंग भी जो है वो भी प्री डिसाइडेड है, प्री डिफाइंड है कि जब क्लाइंट ने इन्वेस्ट किया है, जैसे अगर फेब में स्टार्ट कर रहा है तो फेब से 44th मंथ, 47th मंथ, 50th मंथ, 53rd मंथ एंड 56th मंथ, ये 5 महीने का जो लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ है, वो जो लेवल है उसका एवरेज लिया जाएगा. इफ यू जस्ट डू एन बेसिक सिंपल एवरेज ऑफ ऑल दोस 5 months ऑब्जर्वेशंस and you put it here, you know what your returns are. So this is a mechanical product. This is not something where there is a dependency on some, जैसे म्यूचुअल फंड्स में और स्टॉक्स में और पीएमएस में, there is a dependency on the fund manager on picking the right stocks, entering at the right time, moving out at the right time, right? There are multiple decisions which is dependent on a human. This product is a mechanical product, right? There is no dependency as such. आपने जब एंटर किया है तो ये लेवल है, 5 साल बाद ये लेवल होगा तो मुझे पता है मुझे 14% मिलेगा. I don't need to dependent. I don't need to be dependent on any of us, nor the partner, nor me. The client can himself know that what his returns are. So that's something which is a mechanical product which we are adding again to the overall portfolio of the client because it helps in the overall market scenario. The standard deviation of this product is 4.46%. As I said, Nifty ka standard deviation was around 12.2. Structure product ka standard deviation is 4.46. So it is reducing the risk as well for your client's portfolio. That's why this is added. Accelerates the returns, reduces the risk. And when we did the back testing of this, so we again went back 22 years and we invested in this product every day and you held it for 5 years. 4,560 observations may say 85% of the times you would have made those 100% returns, right? That's what we are saying, 85% probability. So it is increasing the probability also of your clients of making double-digit returns. That's what this product does, right? 98.79% times it gives zero positive returns. It's not given negative returns, but you don't want to project it as a principal protected product, right? Of course, the standard deviation is 4.46%. The taxation on the structured product is that if the holding period is less than 3 years, then it is taxed at your marginal slab rate. But if the holding period is more than 3 years, then it is long term, and long term taxation on unlisted debentures is 20% without indexation. So the taxation is also 20%
on the structure product, right? And the commission structure, the minimum ticket size is 10 lakhs. The 10 lakh ticket size payoff is just slightly different. It's like it's not 100%, it is 98%. And the capital protection is there till minus 10%, but at minus 10%, you don't get zero, you get minus 1%, right? Because of the regulation, we can't issue 10 lakh products. There are restrictions. So we generally keep it on our book for 6 months, and then we can actually market it at a lower ticket size at 10 lakhs. That's why the price is slightly higher, and that's why it's not 100%, it is 98%. And on the downside, even if Nifty is minus 10%, the client will get minus 1% and not the entire principal back. That's the only difference, but rest everything remains the same. That's the uh, product which we have at a 10 lakh ticket size. The payoff which I explained, where the minimum ticket size is 1 crore. The structure product, the payment is upfront, right? There's a 3% upfront which is paid to the partner. And when this is paid on the 15th of the month, 15th of every month basis previous month's mobilization. So whatever business you've done in the month of Jan, on 15th of Feb, you will be paid that commission, right? So on a 10 lakh rupees, you get a commission of 30,000. Right, on a 20 lakh, if you do a 20 lakh structure product in any month, you get 60,000 rupees, and that's a sizable sum, right? Which we all can earn. So that's how the commission structure is. The 3% is the upfront on a 5-year product, and the commission is paid in once the month is over. By 15th, the commission is released, right? So that's on my side. I'll just stop screen sharing, and I'll just reiterate what things we have covered. What we covered majorly is that why structure product. I think so that's the most important part. First, you need to establish that why structure product is required. Actually, because we need to make the journey of the client smoother. Equity markets will be volatile. There will be rises, there will be corrections, and market will not deliver. It's like classic case. If you look at over the last 3 years, 2 years only specifically, it's like from October 21 to October 23, market was at 18,400 and 18,800. Market didn't deliver anything. Today, if you look at market is approximately 21,700, 21,900, right? So there will be periods where the market doesn't perform. That's where we need a plan B, so that the journey of the client is much more smoother, and the client can keep on investing and actually create and build the long-term wealth. So first, why structure product is critical. Then what is structure product? I explained structure product is a simple debenture, right? The conditionality is something which is known to us in advance, at what level the market has to go so that I will get this much returns. I think so that's known to the client in advance, and what it does to the portfolio. So as we've seen that what it can happen over the next 5 years, it can be a bull market, range bound market, or bear market. How the overall proposition, the combination of mutual funds and structured products can perform, right? How it increases the probability, it reduces the risk, right? And accelerate returns. That's what the combination does. How the product is created, I explained you. There are simple 3 steps. 2 steps are plain bond transaction. 1 step is where the conditionality is built. And if you can actually draw the insurance analogy, that we actually become an insurance provider where we sell insurance at 106 level, right? That's the example which I gave. So based on that, the payoff is created. How the money is safeguarded is given to the NBFC, and this NBFC was formed only to issue structured products to our clients, right? It is not a normal NBFC which is into a business of borrowing and lending. We are lending only 31 rupees, right, out of the 100 rupees which we are borrowing through the structured product. So that's the difference which with which actually we manage the product. We've been doing this for the last 10 years. We have seen the track record. It has delivered 15.1%. The probability of principal getting back is 100%, 98%, more than 6%, 94% you would have got maximum coupon. So principal protection as such is something which, that's why we don't provide principal protection, because then the client gets a higher return, and that's what the plan B should do. It should actually add value to the client's portfolio, right? That's what the structure product does. And the commission, as I said, it is 3%, and the commission is paid on every 15th of the month basis, last month's mobilization. So that's the brief, guys, on the why, what, and how of structure product.
Any questions y'all have, y'all can put it in the Q&A box and I'll be happy to take them. Yeah. Some questions, I think so, on the chat. I'll cover that. I've rarely seen MLD structured on equity in mutual fund rather than they restrict themselves to indices as a web and a PP as against SP. It's non-PP and are structured using curated set of mutual funds. This is just for my understanding of clarification. So SP is similar to so basically these are acronyms. That's a market linked debenture or structured product or probably post the budget. I think so. They mentioned they defined MLD. That's why, and we've been using structured products since a long time as well. So these are similar, you can say, but we've been always doing the products basis the index, which is Nifty. So we are not using mutual funds specifically. We are using only the Nifty as the base, and all the conditionality is based on the Nifty. And as I said, we generally don't believe in the principal protection because if you give principal protection, then you add more cost. That's why the IRR is lower. And then that's something which gives you around single digit of 8, 9, 10%, right? That doesn't work as a plan B. So I don't need to give a product to a client. That's the most critical part. I'm not giving a product to a client. I'm basically adding a plan B, which will work when the plan A doesn't work, right? So it's a holistic strategy which we are giving to the client. That's why we don't do principal protection products. That's why the IRR is 14%, right? Because at 14%, it will add value to the overall client's portfolio. That's the reason we do non-PP. Jayesh, I hope I've answered, I think so, your question. So the now, yes, Ashish, the downside from, I think so, last month, it has reduced to 10%. The ticket size is 1 crore in that product. We are not left with any other tickets, smaller ticket size. So whatever over there is something which we have already provided. But the product specs, Ashish, remains the same. It is just optically that the client feels that in the secondary that it is minus 1%. It's just for the optics. I think so. The structure product is, as I said, why plan B is the critical part. What it does to the portfolio. If it is adding value, which it does, then I think so the 14% secondary product is serving my purpose there. So the broad specs remains the same, right? It is accelerating my returns at 33% and reducing my risk, also providing me a capital protection. It is still outperforming, right? If Nifty is minus 10% after 5 years, it is not giving the entire 100, it is giving 99, but it is still outperforming by 9%, right? So it does the work. The structured product still, the secondary one does the work for the client, which is plan B, right? I think so. That's what the broad crux of that product is. And I think so it does help there. So what assurance we have to provide to clients to trust these thoughts? So assurances, sir, so after the trade, or we actually send the order confirmation to the client, which is a written document in which it is mentioned that if this level is something which is of Nifty or higher, these are the returns you'll get, right? So that is in writing. It is not what I speak or what you speak. Everything goes in writing. I am showing the balance sheet, the open balance sheet of my NBFC to the client, sir. None of any banks or any NBFCs or any corporate bonds, if you're issuing, none of them is actually showing you that what it is doing. I'm showing you everything. Everything is there in black and white. There's nothing gray here. Everything is there in black and white where I'm showing that this is what my NBFC is doing. This is how my product is created. And I'm also giving you in writing that, sir, this we entered at this level. If Nifty is at this level on these dates, this is the return you'll make. So everything is there in writing, sir. And it's not something where we've just started. We've been doing this for the last 10 years. And if any specific client who has certain questions, we can actually connect him to an existing client who's already invested and who's gone through this journey.
probably if that can give him more assurance, we can actually do that as well. Prakash. Why is it called principal non-protected when Nifty gains are 6% are protected at 14%? Why it is principal? So it's a non-principal protected structure product. So it's a non-principal protected. Why? Because if the Nifty goes below 10% after 5 years, then your principal is not protected, right? You don't get the 100 rupees back. You get negative. Means you will not get your 100 rupees. You might get 90, or you might get 85, or you might get 80, right? So your 100% is not protected. That's why it's a non-principal protected structure product. Principal protected structure products are where you get your 100 rupees. Your 100 rupees is intact. This is non-principal protected because if, say, after 5 years, Nifty is down by 15%, then you will not get your 100 rupees. You will get probably 85, right? The chances of that is zero because it has never happened, but still it is a non-principal protected structure product. That's why it is what it is. That's something which I hope I've clarified. Could you please show again the rolling returns data of past observations? If you're referring to the product, I'll just share that, Ashish. So this was the rolling return data where we've looked at 4,559 observations, 3,883 observations. The product has delivered 85%. Means the product has delivered 100%, means 85% probability that the product has delivered 100% returns. That's the goal. Means the Nifty was up 33% or more, right? It's a high probability product. The same returns if you're expecting from Nifty over the next 5 years, the probability is only 49%. This product has a probability of 85%. So you're actually increasing your probability sharply. It's like almost 65%. You're increasing your probability over by doing only plain mutual funds. You have a 50% probability, but this has an 85% probability, right? So by adding this, you can actually increase your probability by 35% over the mutual fund or Nifty, right? That's what the product does specifically. I hope I've clarified, Ashish. So how many times ARGFL has never lost money, sir, in the last 10 years. As I mentioned, 100% of the times we've given the principal back to the client, right? So we've never lost money in any of the 10-year period, in which the COVID is also covered. There was the demon time as well. There were certain other wars which also came in. Multiple observations have come in, right? But the product has delivered always. And the probability which I was mentioning, even during the pandemic or even during the global financial crisis as well, for the 5-year period, the Nifty has not been negative after 5 years. So we've covered the last 23 years covers all your major cycles, right? It's been the good cycle, bad cycle, flattish cycle. Everything is covered in the last 22, 23 years. And that's where the probability is 85%. So when the returns are minus 100%, product will give zero value to the customer. How this proposition is valid, sir? So if Nifty goes to zero, sir, all your investments in mutual funds, stocks, PMS, everything will go to zero, sir. Right? It is not only structure product which will go to zero, everything will go to zero. Right? So that's something which if I am trying to, I'm not trying for the worst day as well, sir. It's like that's the worst thing which is possible, right? That everything goes to zero. तो सभी खराब हो जाएगा सर मतलब उसमें अपना ना क्लाइंट टिकेगा ना अपना बिजनेस टिकेगा if Nifty goes to zero. So I don't want to prepare for something which is not happening और अगर वो हुआ तो सब कुछ खराब ही होने वाला है सर. So we have to be realistic, right? I'm not taking this as a zero risk product. There is a standard deviation, but the standard deviation is very low, right? Minus 10% के नीचे नहीं गई है निफ्टी तो नहीं गई है सर. लास्ट 20-22 साल में कभी नहीं गई है. 33% के ऊपर 85% टाइम्स गई है, right? So if the client wants principal protection and everything and he wants, then the FD is an option where he can invest in an FD at 6-7% and not beat inflation. Probably 20 years down the line, he will see that his income and expenses, there will be a huge gap because his wealth will not grow, right? So
when we discuss with the client, it is not something where there is zero risk, sir. तो FD अगर कोई होती 14% की तो मैं वही दे देता सर. मार्केट में कोई 14% की FD है नहीं, right? By adding plan B, I am actually ensuring that boss, his portfolio will deliver double digit even when the market doesn't deliver, right? So I'm trying to make his journey much more smoother. I can't make as an FD. FD जैसी जर्नी नहीं हो सकती सर, क्योंकि वो तो 6-7% ही देने वाली है, right? But by adding this, I'm trying to make that journey much smoother. If I'm only invested in equity, my journey will be much more rockier, right? So अगर निफ्टी जीरो हो गई सर, तो म्यूचुअल फंड भी जीरो हो जाएगा, स्टॉक भी जीरो हो जाएगा, सब कुछ जीरो हो जाएगा सर, राइट? तो स्ट्रक्चर प्रोडक्ट भी जीरो होगा वहां पे. दैट्स व्हाई इट्स अ नॉन प्रिंसिपल प्रोटेक्टेड. मैं उसके लिए नहीं, मैं वो चीज के लिए नहीं तैयारी कर रहा हूँ सर, वैसा है. उसके लिए प्रोडक्ट है विच इज एन एफडी विच विल गिव यू 6-7%. So can you elaborate on conditional coupon, sir? Conditional coupon is basically कि fixed coupon नहीं है, conditional on the Nifty, which I mentioned, right? That 33% ऊपर गई Nifty, the product will deliver 100%. That's the conditionality. But that conditionality is known to us today, right? It is not कि वो मुझे बाद में पता चलेगी. आज ही पता है कि यार आज अगर निफ्टी का ट्रेड होने वाला है, तो अगर 6 तारीख का ट्रेड है, तो 6 तारीख को जो भी लेवल होगा, राइट, वहां से 33% ऊपर गई निफ्टी, तो आई विल मेक 100%. That is what is meant by conditional coupon. It is not fixed कि यार ये fixed है, ऐसा नहीं है. ये कंडीशन मीट होगी तो ये रिटर्न्स मिलेगा. So sometimes client is charged 10,51,000. So basically सर सेकेंडरी का जो प्रोडक्ट है तो उसका ट्रेड डेट एक फिक्स होता है, बट देयर इज अ होल्डिंग कॉस्ट फॉर द कंपनी, राइट? दैट if the trade is happening on 6th, so we generally require the money on 6th. If the client transfers the money on, say, on the 15th or the 20th, then there's a holding cost because the debenture is there on my book, right? That's why the price is increased every week to just cover the holding cost of the product. वो 10,50,000 भी है बिकॉज वो 50,000 का होल्डिंग कॉस्ट है सर, क्योंकि मैंने 6 महीना रखा है वो प्रोडक्ट मेरे बुक पे. तो जैसे ही वो टेन्योर बढ़ता है, कि जैसे कोई प्रोडक्ट है जो पहले ट्रेड हुआ है एंड स्टिल देयर आर सम डिबेंचर्स व्हिच आर लेफ्ट इन ऑन माय बुक, so the holding cost is something which is charged to the client. That's why the pricing changed from 10,51 to 10,52 or 53 or 54 or 55. That is something which is announced in advance. That's just the holding cost because the debentures are still there on my book, right? Regarding put sell, if Nifty is 22,000, then sell 23,000 to 20 put. So that's the, if you've taken 6%, I think so 6% is just a minute. So what you're suggesting is that 22,000 का लेवल हुआ तो उसके 6% ऊपर. एब्सोल्युटली राइट सर. 23,320 का पुट आता है तो स्पेसिफिक नहीं है, उसको या तो राउंड ऑफ होता है या भी बेसिकली कैलकुलेट दैट लेवल कि यार ये 23,320 का जो पुट है उसके हिसाब से वो कैलकुलेशन होता है, वो पुट सेल होगा एंड वो पुट का जो भी प्रीमियम आएगा. So there is a team which actually does this, right? There is a team and there are models in place which are used to actually create this product, right? So ये आपका जो अंडरस्टैंडिंग है वो सही है कि सर अगर 22,000 है तो 22,000 से 6% ऊपर जो है उसका पुट हम सेल करेंगे. So you selling put, it means you take bullish bet, which is right, sir. So when I sell the put, I am bullish. Again, 60% my equity mutual fund. So there also I am bullish. So when the market falls in equity, you lose. And in put selling also you make unlimited losses. So how you make capital protection? So यहाँ पे सर जो प्रोडक्ट है तो बेसिकली आई एम नॉट सेलिंग द पुट एट द करंट लेवल, आई एम सेलिंग पुट एट द अबव लेवल. मतलब 33% ऊपर वाला पुट बेचूंगा. ये जो 5 साल वाला प्रोडक्ट है तो यहाँ पे मैं 33% ऊपर वाला प्रोडक्ट पुट बेचूंगा. तो मेरा लॉस जो है वो आज से नहीं चालू होगा. वो 33% ऊपर गई है निफ्टी, उसके नीचे आया तो मुझे
लॉस स्टार्ट होगा. दैट्स द फर्स्ट डिफरेंस. सेकंड, कैपिटल प्रोटेक्शन डाउन साइड पे कैसे होता है सर? सो देयर आर स्प्रेड्स विच आर टेकन. आई एक्सप्लेन यू अ सिंपल कंस्ट्रक्ट जहां पे एक सिंपल मैंने पुट बेचा है. जनरली जो अभी वाला प्रोडक्ट है वहां पे स्प्रेड्स होते हैं, मतलब मैंने पुट नीचे वाला बाय भी किया है किधर, इसीलिए वो कैपिटल प्रोटेक्शन बन जाता है. व्हेन आई एम बाइंग अ पुट आई एम बेयरिश ऑन द मार्केट, राइट? सो दैट्स हाउ द कैपिटल प्रोटेक्शन इज प्रोवाइडेड अप टू अ सर्टेन लेवल. तो वो स्प्रेड्स का स्ट्रैटेजी है सर, जिसकी वजह से ये कैपिटल प्रोटेक्शन भी आता है. एंड मार्केट में 33% के ऊपर वाला मैंने पुट बेचा है. तो इस इज नॉट आई एम बुलिश फ्रॉम टुडेज लेवल, आई एम बुलिश फ्रॉम द अबाव लेवल. सो दैट्स वेयर द differences and that's where कि मार्केट जब नहीं भी चला, still this will start making money earlier for you. So that's the point. I hope I have clarified, Pankaj. So what happens? So at the maturity, what happens is, uh, so once the final fixing level is done, just prior to maturity, what we do is we buy back the debentures from the clients. So when we buy back the debentures, the gains are treated as capital gains and the taxation is 20%. If we let the debenture mature, then it is treated as interest income and interest income will be charged as the slab rate. So generally what we do is we buy back the debenture just prior to maturity. And what happens is that the money goes back to the client's account. Every Tuesday and Thursday is the unwinding. Of course, that is something which is communicated to the partner and the client in advance. At least 15, 20 days, 1 month prior, the client is communicated that this is the date on which you can unwind. There are multiple dates options and this is the price. And the client redeems, the money goes back to the client account. And we've had almost 97, 98% times the client has renewed his investments. So the renewal rate is very high because this is not a one-time thing. This is a continuous process because any 3 year, 5 year period is where the markets can be volatile and not deliver or deliver single digit returns, right? So it is not a one-time thing कि एक बार ले लिया और हो गया. It's a continuous thing that ये plan A, plan B हर बार होना चाहिए. तो whenever the client renews it, of course, the premium, the client invests and the commission, of course, will be paid that time as well, whatever the product is and whatever the commissions are at that moment, right? But the money goes back to the client account and we have to take it back. If there are options buying, then why so? Sir, as I said, ना sir, वो सर देयर इज अ स्ट्रैटेजी इन प्लेस सर. एक स्प्रेड्स होते हैं सर, जहाँ पे कुछ लेवल पे मुझे स्टॉप करना है तो मैं स्प्रेड्स भी बाय करता हूँ. मेरा अनलिमिटेड लॉस अगर नहीं रखना है मुझे एंड स्टैगर्ड लॉस है, तो वहां पे सर पुट बाय भी होते हैं, पुट सेल भी होते हैं सर, राइट? इफ एज यू अंडरस्टैंड ऑप्शंस, पुट बाय एंड पुट सेल करके सर वो मैं वहां पे मेरा फॉल जो है वो रेस्ट्रिक्ट कर सकता हूँ. यू कैन डू मल्टीपल थिंग्स सर, राइट? दैट्स हाउ द कंस्ट्रक्ट इज. Point is that ये option strategies के basis पे होता है sir, and the team which is doing that is doing since last 10 years. So that's something which is not a problem. Nifty zero level, government is bankrupt and we have to move to. Thank you, Ashish. When we have paid premium towards options buying, then even if Nifty has gone to -100 in such a situation, absolutely sir. So मैंने सिर्फ put option ऐसे नहीं buy किया है. मैंने वही बोला वसंत सर की प्लेन पुट ऑप्शन लेना है तो उसका कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है सर, तो ये 14% नहीं मिलेगा सर. यू अंडरस्टैंड, सी ये जो भी प्रीमियम है ना, ये प्रीमियम के बेसिस पे आईआरआर बन रहा है, मुझे 13-14% का आईआरआर देना है. इफ आई जस्ट कीप ऑन बाइंग प्रिंसिपल प्रोटेक्शन, देन आई विल नॉट बी एबल टू गिव यू 14%, आई विल बी एबल टू गिव यू 10%. नाउ 10% का अगर मैं प्रोडक्ट बनाऊंगा तो वो प्लान भी नहीं है, इट्स अ प्रोडक्ट, इट्स अ बॉन्ड. आई डोंट वांट टू गिव अ बॉन्ड टू अ क्लाइंट, आई एम गिविंग अ प्लान बी टू अ क्लाइंट, बिकॉज ये प्लान बी क्या करेगा कि जब मार्केट नहीं चलेगा जब भी ये प्रोडक्ट चलेगा जिससे ओवरऑल पोर्टफोलियो बहुत अच्छा दिखेगा, राइट? सो दैट्स द डिफरेंस सर. दैट्स व्हाई आई एम नॉट लुकिंग एट अ प्रिंसिपल प्रोटेक्शन वाला प्रोडक्ट ओनली. आई कैन क्रिएट दैट. मेरे को नहीं करना है क्रिएट सर. मैंने लास्ट 10 साल में एक भी प्रोडक्ट नहीं दिया है प्रिंसिपल प्रोटेक्शन वाला. क्यों नहीं दिया है? क्योंकि जरूरत नहीं है सर उसमें. मैं उतना रिस्क लेने को रेडी हूं कि यार -10% नहीं हुआ है कभी, तो मैं नहीं लूंगा उतना रिस्क. अगर हुआ तो वो देखेंगे सर उस टाइम पे, देन एवरीथिंग विल बी बैड, राइट? 5 साल में अगर निफ्टी -10 है, देन मेनी थिंग्स विल बी बैड. इट इज नॉट कि सिर्फ स्ट्रक्चर बड़ा खराब होगा सर. सो पॉइंट इज दैट इट शुड वर्क एज अ प्लान बी. दैट्स व्हाई दिस स्ट्रक्चर प्रोडक्ट इज क्रिएटेड. एंड इसका जो 14% का जो आईआरआर है वो ऐसा है सो दैट बिकॉज बाय एडिंग दैट इट इज एक्चुअली एडिंग वैल्यू टू द पोर्टफोलियो, अदरवाइज इट डजंट.
So, Jayesh, this 2.55 put selling is done only once. So when the product is created, जिस दिन trade होता है, उसी दिन put sell होता है, उसी दिन strategy set हो जाती है. So that strategy is set. Puts ने उसी दिन, जिस दिन trade होता है, उसी दिन set होती है. 2.55 मैंने इसीलिए लिया है because I wanted a product which can deliver 13% at 6%. So ये 2.55 ये मैंने decide किया है. I could sell 5 also, I could sell 2 also. But अगर 5 करता तो मेरा principal protection बहुत ऊपर हो जाता, शायद 100 पे ही मेरे को नेगेटिव मिल जाता था. अगर मैं 1.5 ही पुट बेचता तो शायद 13% नहीं मिलता, 11% मिलता. बट देन इट इज नॉट वर्किंग एज अ प्लान बी. सो दिस 2.55 वाला जो नंबर है, दैट इज समथिंग विच द टीम डिसाइड्स, because I want to create products which can deliver 13, 14, 15%, right? But the selling happens on one day. Puts में मुझे फिर, मैं क्योंकि 3 साल के ही पुट बेचता हूँ या 5 साल के पुट बेचता हूँ, I don't sell a 1 month or a weekly puts for which I have to roll. I don't do that. I do it for the tenure of the product. So for the retirement plan, of course, we have added plan B structure product. तो retirement plan के लिए कैसे करते हैं सर कि client का requirement जो है, तो first 5 year का जो requirement है, right? So we actually had taken an example. So if the client has 1 crore rupees and उसका 50,000 का अगर requirement है every month, which is growing at inflation of 7%. So what we generally do, the plan is that first 5 year वाला जो पैसा है, that is invested in the debt funds. Currently the arbitrage funds. मतलब first 5 साल का पैसा जो है वो मैंने सेफ में डाल दिया है. वहां से हर महीने उसको पैसा चले जाएगा. कोई रिस्क नहीं है. First 5 year का requirement is absolutely met. The requirement from 5 to 9 years is where that amount is invested in the structure product. मतलब वो 5 साल का स्ट्रक्चर प्रोडक्ट है. वो 1 करोड़ का अगर पोर्टफोलियो वैल्यू था एंड 50,000 अगर महीने चाहिए था, तो वी हैड एलोकेटेड 20 lakhs इनटू द स्ट्रक्चर प्रोडक्ट. नाउ दिस 20 विल बिकम 40 lakhs आफ्टर 5 years. 5 years में से ये जो 40 लाख आएगा स्ट्रक्चर प्रोडक्ट से, 5 से 9 साल वाला जो भी 50,000 इन्फ्लेटेड एट 7%, ये पेमेंट उसको स्ट्रक्चर प्रोडक्ट के प्रोसीड से जाएगा. एंड इक्विटी का प्रोसीड 9th ईयर से जाएगा. सो बाय डूइंग दिस 20 years में 1 करोड़ जिसने डाला था, 50,000 हर महीने निकाला है, विच इज ग्रोइंग एट 7%. एट द 20th ईयर हिज मंथली पे आउट वॉज 1,80,000. उसके बाद भी उसका पोर्टफोलियो वैल्यू वॉज 2 crores. So that's how the retirement plan works, where we've added plan B also, which is structure product, mutual funds, equity and the debt. So equity को मैंने almost 10 साल दे दिए हैं, उसके बाद मैं redeem करता हूं. So I am actually reducing the probability of making negative returns in equity, because 9 साल में निफ्टी ने नहीं दिया यार नेगेटिव. वर्स्ट अगर अनलकीस्ट से अनलकीस्ट आदमी है तो भी उसको नहीं मिला होगा नेगेटिव रिटर्न, फ्लैटिश होगा, राइट? But it doesn't hamper him. That's what I'm saying, that it doesn't hamper his overall portfolio. It doesn't hamper his monthly payouts. His monthly payouts are intact and his wealth is also growing. Because अगर आज वो फिक्स डिपॉजिट में डालता है या सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स में डाल रहा है या और कोई भी वो LIC प्लान्स में डाल रहा है, देयर हिज रिटर्न्स आर सिंगल डिजिट. एंड एज अगर उसके खर्चे बढ़ेंगे, वो उसको खर्चे कम करने पड़ेंगे, बिकॉज FD में आपका प्रिंसिपल नहीं ग्रो होता, आपका इंटरेस्ट तो पूरा आप यूज करने वाले हो. 5 साल बाद इंटरेस्ट रेट भी कम ही होने वाले हैं. सो इज गोना हैव अ बिग प्रॉब्लम if he's actually dependent on a retirement plan in an FD, right? Where he will get principal protection of 100 rupees, but then he will have to eat into his principal after 5 years or 10 years. Because if your expenses are increasing and your interest rates are expected to go down, that plan is not going to work. So he will have to allocate something to equity. मेरा जो ये स्ट्रैटेजी है, इसमें एलोकेशन ऐसा है कि यार इक्विटी को मैं ऑलमोस्ट 10 साल दे रहा हूँ. आई एम गिविंग द लॉन्गेस्ट टाइम टू इक्विटी टू डिलीवर. First 5 years debt will manage, and after 5 years the structure product will manage. The minimum, okay, the minimum, as I said, sir, is 10 lakh 50,000. That's the secondary product में 10 lakh 50,000 का price है. Liquidity, there is liquidity after 1 year. So client अगर चाहिए तो 1 साल का lock in है. After 1 year, the client can redeem. That is an option which is there. What if the market is down? So in COVID, we actually did that, Ashish. Okay, COVID में that option was provided to the clients to a certain level. But that's an extreme case. Otherwise, generally, we don't have not done that after that as well as such. But that option is there because the NBFC issue. So that option was there.
One crore product also can redeem, sir, after 1 year. After 1 year, that option is available for everyone. 10 lakhs हो के 1 crore हो, that option is there कि एक साल के बाद. But that's in, so ideally when you actually pitch it, आप जब pitch कर रहे हो client को, तो pitch it with the 5 year horizon. It is not something where we want to actually just enter and then move out of after 1 year. But अगर emergency है, client को requirement है, तो we can provide the liquidity after 1 year. We've provided to a certain partners and clients जिनका requirement था, उनको हमने दिया है, liquidity दिया है after 1 year. Any more questions? I think so. There are certain questions. Just a minute. What is the maximum loss if the put option doesn't work? So the max. So everything is there in the payoff, Donald. So whatever is there in the payoff, that would be the returns which the client will get. So उसमें Nifty का number भी है. Nifty levels are also mentioned after the at the average of the final fixing level dates. वो जो एवरेज होगा वो आप अगर चार्ट में डाल दोगे तो आपको आपका नंबर मिल जाएगा कि ये हुआ तो ये मिलेगा, ये हुआ तो ये मिलेगा. सर कोई एम्बिग्यूटी है नहीं. देयर इज नथिंग ambiguous there. Everything is there what is there in front of the client कि यार ये हुआ तो ये मिलेगा. मतलब it's black and white clear है, crystal clear है. So it is not कि option put option चला नहीं चला. सर वो that is something which the NBFC team and the hedging team will do, जो 10 साल से कर रही है. सर तो ऐसा कभी हुआ नहीं हमारा कि हमने कुछ पुट ऑप्शन नहीं चला. या ये पुट ऑप्शन का सर लीनियर होता है, बाइनरी होता है पे ऑफ, कि अगर ये हुआ तो ये मिलेगा या तो ये मिलेगा. इट इज नॉट ऐसा कोई कंडीशन नहीं होता है सर वहां पे. मतलब वो ग्रे एरिया नहीं है. इट्स आइदर वन और जीरो options, and these are traded on the exchange. So it is not कि I am doing some over the counter or something. These are traded on the exchange only. What will be the gain? Clients gain if client redeems after 1 year in favorable conditions. See, client will make only 14%. मतलब उसको 14% से ज्यादा नहीं मिलेगा पंकज. Even if से निफ्टी अगर आज से 22,000 से स्टार्ट करते हैं, निफ्टी से अगर एक साल में 25,000 हो जाती है, लेट्स से फॉर एग्जांपल, मतलब 3,000 पॉइंट्स, मतलब मोर देन 10-12% हो गया, राइट? ही विल गेट the IRR which is 14% for the tenure which he is invested. तो मतलब उसको 14% ही मिलेगा. So there is no benefit for the client to redeem after 1 year in any favorable condition or unfavorable conditions, right? मतलब वो ऊपर होगा. जैसे दी एक्सपेक्टेशन इज के यार अगर एक साल बाद या 1.5-2 साल बाद अगर क्लाइंट आता है, क्लाइंट को रिडीम करना है, तो एक्सपेक्टेशन क्या था प्रोडक्ट का कि यार ये 5.6% पर एनम मूव होनी चाहिए थी. मतलब 2 साल का अगर लू तो से समझो 12-13% होना चाहिए था. अगर निफ्टी 15% ऊपर है तो आई विल ट्राई टू मैच द आईआरआर ऑफ द प्रोडक्ट, एंड आई विल गिव हिम द आईआरआर टू फॉर द टेन्योर फॉर विच इज इन्वेस्टेड. मतलब 2 साल तक उसको 14% का आईआरआर में दूंगा. उसको 100% तो वो अगर 5 साल टिका रहेगा तभी मिलेगा, 2 साल में नहीं मिलेगा सर. बिकॉज मैं भी 5 साल टिका रहेगा जब भी मेरा वो पुट ऑप्शन जीरो होगा सर, नहीं तो नहीं होगा. Any more questions, partners? Questions? So my email ID contact number is available, sir, with all the BDMs. So you can get in touch with them and they will be happy to connect you with me, sir. Not a problem. And knowledge series में है सर, मेरा number है वहाँ पे सर. Knowledge series में I am there in the knowledge series. Hope you are there in the knowledge series, so you can get the number from there, sir. You can put it here. ऐसा कुछ नहीं है, I'll just put it.
Okay, partners. So thank you for patiently listening on a Friday evening. I hope I've been able to cover the why, what, and how of structure product. I hope you've understood. You can get in touch with your business development managers. They will connect with you. And any questions or queries you have, they will be able to actually clarify and solve this. Point is that when you actually discuss with the client go first why structure product, I think so, is most important, right? What and how is something which is easy. Why अगर आपने establish कर दिया, first you should understand, आपको भी hopefully समझ में आया हो कि why क्यों जरूरत है structure product की. I think so वो बहुत critical है, right? Because see, as an advisor, we have to manage his expectations. Point is, if he'll stay invested, then he'll make money, and market will be volatile. Currently, of course, we are at an all-time high and things are very rosy, but it will not stay rosy forever. There will be ups and downs. And during the downs, I think so that's where our role becomes much more critical. And that's where a plan B is something which will help you to manage his expectations, to get more monies from the client, and to manage a bigger wealth of the client. That's why this proposition has been created. And that's what has helped us actually, where we are managing 55,000 crores today only in these two products. सिर्फ म्यूचुअल फंड और स्ट्रक्चर प्रोडक्ट में सर आज हम 55,000 crore manage कर रहे हैं, because this too is enough for any client. We don't do any PMS, we don't do stocks, we don't do AIS, right? Because it's not required. This 12 to 14% consistently, if a proposition can deliver in the most easiest, simpler manner and most transparent manner, that's what this mutual fund and structured product does. And that's what you should actually provide to your clients. So hope I have clarified a lot of things on structured product, right? And the BDMs will connect and take it forward. Yeah. So thank you guys and have a great weekend. Yeah. Bye.